Am I audible, everyone? Can you hear me? Yes? Okay, lovely. So, good morning, everyone. Welcome to Sangeeta's Cooking Mantras, 8th day of the 10 days baking boot camp. And we have learned sponges, cupcakes, cookies, ganache, sugar flowers, and whatnot in this session, right? But today, again, I have a new lesson for all of you, which is going to be, can you guess what it is? Do you know what it is? Type in the chat box if you know what we are going to cover today. Oh, lovely. Dr. Ramandeep is up to, oh wow, so are so many students. Very good. Okay, so I'm going to teach you how to hand paint on your cakes. Don't make me sleep. Okay, so I'm going to teach you how to paint on cakes. So I get so many queries when students ask me, ma'am, we don't know how to paint, we are not good in drawing. हमने बचपन से कभी drawing किया नहीं है, हमारी drawing अच्छी नहीं है, काम भी नहीं बनता and all that. But with the kind of techniques that I'm going to share today, you will not need to be an artist or a painter or be good in drawing. Okay? Sounds exciting? All of you can try this and all of you can paint on your cakes. All right? So I think I'll give you a clearer view and I'll give you a closer view setup. So give us 2 minutes and we'll just do a setup and then come back. Give me 2 minutes. I'll just do the setup, camera setup. Okay, so now I'm going to start. So first thing is, of course, because we're going to paint on fondant, we need fondant. So before we start, I'm going to teach you how to do one detailing, which is the eyes. Because if you go wrong with the eyes, it can really make your things look bad. Okay, just flatten it a little and start rolling it out. This fondant is just for practice. Now, if you don't know how to draw, you can, of course, trace it out. Okay. First thing is to draw. Do we have a base? A base. So, of course, when painting with on fondant, we need gel colors. We need evaporates so that we can dilute our colors. Okay. जैसे हम बचपन में पेंटिंग करते थे, तो with the paint, what did we use to dilute? Those were all watercolors. तो हम पानी के साथ dilute करते थे. Yes, Jaspreet. We used to dilute it in water. But because the colors that we are using today are gel colors from Baker's Village, we are going to dilute it with
evaporates. Now I'll show you, because you cannot directly dip your brush in paint and start painting, right? It will be too concentrated. बहुत ज़्यादा concentrated होगा. So you cannot do that. So to dilute it, you need a little evaporates. How I want to use it is just open the lid a little and squeeze. देखो, dilute करने के लिए. So I have brown gel color, and this is black gel color and white. All right. Now, so I have this fondant with me. It's just for practice. I'm just drawing a random eye just so that you can understand the shading. बहुत ही rough है. Okay. Now, how are we going to paint? So to paint, we'll take black gel color first. Of course, diluted in evaporates. Take a thin brush. So you will require all the brushes that I asked you to buy. Remember? So there is no alternative for brush. जो भी चीजें मैंने आपको खरीदने के लिए बोली है, they are absolutely important. Okay. So now, first let's do an outline. Do it slowly at your own pace. You don't have to speed up. Just an outline with a thin brush. Now there is this pupil that we are going to cover. Now, when we made the toppers, remember what we did? We made a reflection on the eye. You remember that? We made a reflection on the eye. We need to do that in this one also. जैसे हम apple बनाते हैं तो उसमें एक reflection बनाते हैं. Something like this. So this triangle part we are not going to cover. We are going to keep it light, white. So that will act as your reflection. Okay. Now you want to make a black eye. You can have it completely black, or if you want a brown eye, then you can wash your brush. Wash your brush in water. And then you can fill it in brown. Is it visible? Should I get it closer? Anita is giving me thumbs up and also sleepy. Anita, chai le lo. Visible? Okay, nice. Now we are not going to cover the entire reflection. We are just going to cover the rest of it. You can go 2 times, 3 times. See, this is just one coat that I have done. Do you see the reflection in the eye? Now, if you want, you need black eye. Then you can dip your brush, of course, in black gel color with evaporates and put it in black. Indian eyes are mostly black. Okay, Ramandeep is saying closer view. चलो सामने लेके आओ और पास में क्या हो. Skin color थोड़ा सा चाहिए. Skin color. So I'm using the skin color. Okay. So these are the bottles that's available in Baker's Village. तो आप ये bottles use कर सकते हैं.
All right. Now I'm going to make the lashes. बस. अभी ठीक है व्यू? Dr. Amandeep, better? Now I will take a little black gel color on my thin brush and start making eyelashes like this. Line, line, line कर रही हूँ मैं, ठीक है? ज्यादा नहीं, just थोड़े थोड़े. ये आपको धीरे धीरे ही कर पाओगे. मैं जितना इजीली कर रही हूँ आपको थोड़ा टाइम लगेगा, बट दिस इज नॉट व्हाट आई एम टीचिंग यू टुडे. ये थोड़ा कर करके ही प्रैक्टिस होगी आपकी. ओके. देन ऑल्सो यू कैन ड्रॉ एन आईब्राउ, बिकॉज जितना भी आप आईज बना लो बिना आईब्राउ के वो अजीब सा ही लगेगा. Just do a rough sketch of the eyebrow. If you can see it step by step, I'll show you. एक और चीज जो आपको यहाँ पे करनी है, see why I'm teaching you the eyes in depth is because when you make it, I'm adding in, see what I'm doing is I'm taking a little bit of skin color. This is how it comes, very dark. Add it with little white to get this skin tone, okay? This skin tone milegi. And then we have this portion as skin color. अब अपने eyes देखना ध्यान से. Do we have this part or not? You can use vodka, but not everybody is comfortable using vodka. In that case, you can use evaporates and then make some lines like this from this side and this side, like nerves in the eyes. थोड़े थोड़े ऐसे detailing के लिए. Can you tap it two once? ठीक है. And now let's do the eyebrows. Or the eyebrow, again taking black paint, and don't just do a full black. Just make some lines like this to make the eyebrow. थोड़ा सा मार्क करिए कि कहाँ तक आपको जाना है. What is the shape of the eyebrow that you want? And when you practice, you're going to get the hang of making it. अब जब मैंने line कर लिया, I know I cannot go beyond this. So now I will add in the lines. I know not everybody loves painting, but this is a good medium to do when it comes in your cakes. And you can be creative and you can give your customers something new. Because every time customer will start looking for something new. So as a baker, if your customer come to you and ask for a hand-painted cake, आप उनको बोलोगे कि नहीं मैं आपको sugar sheet लगा देती हूँ. It's not a very good idea. So in this class, I wanted to have this hand painting also. Now I know all right, followed. So with this reflection, it will start looking like an eye. अगर आप इसको block कर दोगे तो ये देखो कैसा लग रहा है. It will look like there is no reflection. It's not looking at you. When you have the reflection, see, जान आ जाती है फिर eyes में. Followed. Now keeping this aside. Now I'm here to make things, simplify things for you, like always. All the classes were simplified, isn't it? So, for your wedding cakes or for your, what is it called? Just mangle pan sara. Yes, bridal shower or मेहंदी वाले cakes या हल्दी वाले cakes. तो उसमें for those cakes, you must have seen this lady. Have you or have you not? हाँ या ना? जल्दी जल्दी लिखो. फॉन्डेंट रोल करो, रोल करके दो मुझे. इसी बेस पर रोल करो. ये हटा दो, इसको रोल करके दे दो. How many of you have seen her? So you must have seen her in many of the bridal cakes, right?
है ना, मेहंदी वाले cakes, haldi wale cakes, and we see her in all such cakes. So this printout you can take out from Google. Whatever size you want, you can take her out and take a plain printout. घर के printout से ही printout निकाल लो. Now see, I've seen, listen to me carefully when I'm talking about this, because this is what is going to make all the difference. When you are with me, I want you to make 50,000 a month right away after the class. So if you follow my tips, it's not going to be difficult for you. But वही अपनी पुरानी बुद्धि लगा के अगर वही काम करोगे जो पहले भी करते थे, तो फिर क्लास में आने का कोई फायदा नहीं है. If you are in my class and if you are not listening to what I'm telling you, then I'm not responsible that you are not getting orders, right? So you must have seen that people take out a sugar sheet printout, cut it out, place her on the cakes and place some fresh flowers. Have you seen it or not? In the chat box, please, quickly. Yes. So for me, if you ask me, I see that it's zero creativity. क्यों कोई तुम्हें पैसा देगा बताओ? So this sheet is going to be around 100-150 rupees. Flowers are again going to be maximum 100 rupees for you, right? 200 rupees में आपने सजा दिया, but there is nothing edible. Oh, ठीक है, sugar sheet is edible, but it's not handcrafted. So if somebody takes out a printout, cuts it and pastes it, it's zero creativity for me. Okay, so that's why I wanted to have this hand painting in this session. All right, so I will teach you whenever there is a hand painted thing that comes along, a 2D topper, how beautifully you can make it. And I'm also going to give you a homework. वाला लिंक निकाल दे. समझ में आया सबको? ठीक है? So imagine if we can create this beauty in hand painted cakes. How amazing is it going to look? Our customers are going to be amazed, isn't it? So whenever I get requests for a topper or figurine or anything that's like this, I prefer hand painting it. आज आप लोग Instagram पे मेरे जाना और देखना जितने भी bridal cakes I have made and the 2D topper cakes that I have made, go and check them out. We will not share links. आप खुद जाके देखोगे and tomorrow I'm going to ask how many of you have seen and I want your screenshots also. एकदम पक्का काम करेंगे. ठीक है? Because the more you see, yes, Harpreet is having a good laugh. आज network सही है Harpreet का. So the more you see, you will know what ma'am is talking about. So I preach what I practice. मैं ऐसा नहीं करूंगी कि आपको 10 ज्ञान दूंगी और मैं उसमें से कुछ भी follow नहीं कर रही. Everything that I share and do it is from my own work experience. That's why I told you initially that I take, still now we have classes going on every month. Still I do cake orders. Why? To be up to date. कि अभी weather कैसा है, कैसा चल रहा है, what's in demand, what should go. If I don't do it myself, who am I to give you ज्ञान? मुझे खुद को ही नहीं पता. आप बोलोगे मैम खुद तो करते नहीं है, बोलने में क्या जाता है. But that's the truth. If I don't do it, how am I going to, you know, ask you to do it or solve your queries when you face a problem, right? Link, reel wali link इसकी जो हमने चढ़ाई थी. Now, so I will have rolled fondant again. अब आपको fondant roll करना मैंने सिखा दिया. I'm not going to do it every time, okay? And you will take a printout, place her. और क्या करेंगे? We are going to trace her out. Follow? तो मैं ये बैठ के करूंगी. Okay, so grab such a pointy tool. It will come in your Dresden tool. This one also works if you have such kind of a tool. Okay, and don't use it like this. Don't use it like this. If you use it like this, you are actually going to damage your fondant. Twist it and use the blunt part like this. Don't use it like this. Don't use it like this. I'm telling you again and again. It will tear off your fondant. ऐसे कोई नहीं बताएगा आपको.
and flip it and use it like this. Can you see? Now, so we'll trace her out. So to trace her out, we will start from one side. नीचे scroll करो. Tracing वाली जो इनको दिया था हमने task. Okay. So to trace her out, I would suggest you start from one side. अब यहाँ पे कर लिया, फिर यहाँ पे कर लिया, फिर यहाँ पे कर लिया, you'll be lost. So start from any one side, hold the paper, it should not move. And of course, tracing हम सबने की है बचपन में, की है कि नहीं? I think all of you have done. So tracing will help you get the outline for the design that you're wanting to do, be it anything. बीच में उठा के चेक नहीं करना है कि इंप्रेशन हो रही है नहीं हो रही है, because otherwise you won't be able to place it again. Just trace the outline, border. And you don't need to outline the jewelry part. Okay? Because we might not be able to get the same size jewelry. We'll use beads. So just trace the mota mota, majorly the position of the eyes, the position of the lips, ears, all that. मेरे नंबर पे भेज करो, नहीं लिंक फील्ड पुरानी होती है और पीछे जो हाँ See, did I lift it? एक बारी भी नहीं उठाया मैंने. So we are just tracing her out. So if you trace her, you don't have to be an artist. Tracing छापना तो कोई भी छाप सकता है, हाँ या ना? Yes. So everybody is not an artist. Everybody doesn't have a hobby to draw, sketch and all. But when it comes to your creativity and making your cakes, we have to figure out something. Okay. So मुझे लगता है हो गया है. I have majorly done the things that I wanted. So this thing also, if you want, you can do a round. If you want the die of it, or you can do it randomly. I've done this chunni, I've done the outer part, I've done the nose, lips, everything else I've done. तो आप देख लेना आपको क्या क्या चाहिए. For the moment of truth. दिख रहा है? And this. Can you see it? Is the screen flickering or is it? Yeah, is it? Why is it flickering today? White पे white इसलिए. Can we take a blackboard? एक बार blackboard लाना देखते हैं. Ramandeep is saying it's fine for me. Shruti is saying yes, no. What does that mean? Pooja is saying yeah. Even for me, it's flickering. Let me take a blackboard and see what happens. So I can see that the tracing is done. I don't know if it's visible to you. Is it visible to you? Flickering 100% camera issues. Front camera करते हैं फिर. Front camera करो. Wait, front camera में ना flicker नहीं होगा. अभी नहीं move कर सकते तो. And once you trace it, I would advise that don't try to shift it,
because fondant is super soft. देखो, है ना? Camera off किया? Not visible. We have closed the. We have switched off the camera. We are trying to make a front camera, and let's switch it on. Yeah. I think this is not flickering, right? But closer view दो. ऐसे नहीं देखो. नीचे से neck से नीचे करो. नीचे करो. हाँ बस. पास करना पड़ेगा. Better. It's not flickering now. Of course, you won't be able to see the tracing so well because it's still white. I'm just trying to twist it here and there to just show you if it is visible. Little you can see, right? So now, first thing is, I can also see little. Oh, this angle is good. I can see it. So first thing is, I'm going to cover the face in skin color. Flat brush. So take these are no professional brushes. These are like regular brushes that you see. Okay, so they're right professional brushes, but they last as it is. So you can use even these brushes are from my childhood. Actually, you can see the condition of the brush. These were when I was in 6th, 7th, 8th grade, I think. But the bristles are so good. I still can't throw them away. They are super soft. And after coming to this profession, I think I have bought like hundreds of brushes, but they don't work like this. So anyways, I'll show you with this synthetic brush so that because you are going to get such brushes. Even if it's rectangle, it works. Okay, whatever you can get hold of. Now I'm going to make it into a skin color. I have this darker shade of skin. So I have this darker shade of skin. And then I add in a little white to it. देखो, जैसे मैं white मिलाऊंगी, ये light skin color बन जाता है. So adding white to the skin color will give us a lighter shade of skin because we don't need this dark tone, right? These are concentrated colors that come in. So you have to add in a little white to get the tone that you want. Followed? Gradually white add karoge so that you don't have to white. White यहाँ पे डाल के देखो थोड़ा side में. हाँ. बस that's it. Now I'm going to the face. Yeah, I'm just lifting it so that I can see it a little. I'll just do the face cover and I'll show you once. कुछ नहीं, मैं बस पूरे face में एक बार skin color लगा रही हूँ. Just see, flatten your brush and do a skin coat like this. Coat it. Coat कर लो, easy होगा. Eyes जहाँ पे वहाँ पे white color कर देंगे बाद में. Flat brush and coat it in white. So now after every stroke, it's good if you can keep it for a while. But if I keep it, then take a lot of time. So just coat it flat. And then we have the neck area also. Now, for reference, you should always keep this picture in front of you. So then you can see that the face is skin color, the neck is skin color, and then the neckline, right? So all that needs to be skin color. Flat brush को हम flat रख के use करते हैं, pointy रख के use नहीं करते. Because it's a flat brush, keep it flat while using it. So it will give you a good coverage of the area. Right? Now, also what we are going to do is the dupatta that you see, I can directly use this red.
In the meantime, the skin color will get dried. So we cannot sit, right? So we can color the other parts of her dress. So can you see this chunni? If you want a maroonish shade, then you add a little black to it. So you can either use the skin color or you can use red color and a little black to it if you don't want to buy all the colors. Okay, kya hua Diksha? Skin color and white. So the skin color from the bottle, adding in a little white will give you light skin tone. All right. And if you want to make this maroon color that she has, this dupatta, then you add red and a little bit of black. I want red, so I'm adding this because the skin color looks like a little red. Okay. So I'm using the same directly. Suit yourself. If you want green lehenga, green lehenga. If your customer wants. Acha, acha. Okay. All right. Turning it little towards me to be able to see where I've traced. If you want to go over and over again, you can do that. And then now once you have this dupatta, this is not final. You can put it again. We are just putting in a mark so that we know हाँ यहाँ पे ये कपड़ा ऐसे था. Followed. If it's a little tera mera also, don't worry. Because there will be a lot of hair and accessories and jewelry. So I might need a second coat also on this one. I'm just coating it because coating it in color will also make it visible for me. अभी जैसे दिख नहीं रहा ना, see, I'll bring it closer to you. Now it will start showing. At least दिखने लग जाएगा feature. Okay. So now we have the dress part. If you want to make a neckline, make the neckline. Just one coat so that I can see. Okay, so by now, see, the skin color is drying. Okay, so once you do the lighter color, thoda dur. I did not do the skin color and immediately started doing the black hair because it can get into the skin color. So instead, what I did was I went a little far from the, skin light color that I did recently, and then now I will do the black hair. मेरे को brushes दे दूँ वहाँ से निकाल के सब दे दूँ. So buy one of these sets. So ये भी खरीद सकते हो दिखाना. So for flat brushes, you can buy flat brushes and also round brushes. कोई भी खरीद लो. I'm not brand specific about brushes. जो मिल जाए, जो सस्ता मिल जाए, price you have to check. You can use that. Now I will do the hairline. In between, you have to keep adding evaporates to it. If you want to add, use vodka, feel free to use vodka. So this Mangtika area, see, this area is over the skin. So I'm not doing hair here. I'll just do the hairline. Okay.
You can take a thin brush also if you want. All right. So far, so good. I'm not doing the hair here, just this much, so that I can see where we had the hair and all. Right? Now, एक और कपड़े लेते हैं. Keep a hand towel handy because every time you wash your brush, plain water, जो काला हो गया है अब, because black color will obviously coat your water, so you need to keep changing the water also. Now, before that, we are doing the mota shades, okay? So I'll take a little brown. And coat this area. Because this is the shadow part or the inside part of the chimney. You can change your own shades, okay? ऐसा नहीं कि exact you have to give the same shade. You can change it. But this part is darker, right? Because it's inside part. This part is darker than this one because this is shadow part. This is inside. So inside light is less. So that part we are making a little darker. यहाँ तक समझ में आया है या नहीं आया? अभी मैंने पूरा कोट नहीं किया है. Did you follow till here? So the idea is to trace really well. Be patient and trace it out. अच्छे से tracing कर लो. If you are impatient while tracing, then you will have a tough time finishing it. So just be patient when you are still trying to trace it. Okay. Now we're going to do the features. धीरे धीरे features को करेंगे. So take brown. I would not suggest take black. Take a little brown and then go all over and make the shape of the. You just have to follow your tracing. With a thin brush, okay? Now, honestly, I really can't see very well because I'm doing it here. If I was at my studio working for my own bride, I would go near the window where there is natural light, ताकि मुझे ज़्यादा दिखे. Okay? तो मैं थोड़ा सा अपने तरफ tilt करूँगी so that I get an angle and I get to see what I'm doing. Just to trace out. See, I'm just tracing it out. जहाँ जहाँ मुझे दिख रहा है, I'm tracing it towards. Okay. इससे भी thin brush को करेंगे. So whenever you're trying to do such paintings, go near a window or a natural light where you can actually see really well.
Okay, for the sake of the class, I cannot because all my wiring and cable, everything is here. देखो जो भी eyebrow है पता नहीं क्या बनेगी ये because I'm doing it very whatever I can see I'm just following the lines. Not bad. पतली brush है ना? So use thinner brushes. See, this one is thinner. दिख रही है? ये थोड़ा सा मोटा और फ्लैट है. आपको जो भी कंफर्टेबल है use that. And you need a 00 brush, a zero brush for sure. ये thin काम करने के लिए. If you want, you can write it down. Just a second, 2 minutes. I'll show you before coloring what I have done. I'm just doing the outline. देखो एक side outline है. Visible, visible. दिखी? Now, once you got this, जब आपको face मिल गया, तो ये जो खाली space है, ये जो खाली areas है, you need to fill that out also, right? You got the oval shape of the face. Now fill those areas out. कोई भी color के साथ आप उसको fill करिए. तो इससे detailing बढ़ेगी. Because there can't be a vacant space. It will either have a cloth or maybe her hair, something will be there. Dekho, I'll show you one side. See one side and check the other side. Do you see the difference? Good. Now, like I've shown you, I'll do the eyes. I'll do the eyebrow. ठीक है? Eyes मैंने इसलिए बड़े में detail में दिखा दिया आप लोगों को. Because if I do it in this tiny thing, you won't be able to see it. All right? And one more thing that you can do is, if you want to increase the shadow of the face, just with a little darker tone onto the sides. Dark color एक लेके side में थोड़ा सा लगा. So it will not, the face will not look flat. Now I will keep doing the eyes. Let's do the eyebrows first. Give her long eyebrows. She's the bride after all. And as per your client's customization, if your client has a blue eye, you can give her a blue eye. Customization you can do. जरूरी नहीं है कि ये प्रिंट आउट है तो प्रिंट आउट में जो कलर्स है वही आप लगाओगे. Suppose your client is wearing a blue lehenga, you can give her a blue lehenga. Follow it, all that you understand, right? देखो eyebrow fill किया है मैंने.
What is Ramandeep eating? I also want to eat. Eating or making? Oh, she's making. आज रमनदीप ऑफिस में नहीं है. Oh, today is Saturday. ओके आप अपनी तरफ देख के अपना जितना भी बेस्ट दे सको जस्ट गिव इट योर बेस्ट. See, it's not just because I really love painting. It was my hobby to paint when I was a kid. I don't mean to scare you, but I've practiced a lot. I never painted on fondant before. तो fondant पे painting मैंने कुछ साल पहले ही start किया है, and it's completely different from painting on your paper. The paper is not that soft. Okay, so I would suggest once you trace it, allow it to be here so that the surface dries out a little. Okay, then it will be easier for you to paint. And one more tip that I want to give you here is, please do not use a lot of corn flour when you're trying to use fondant for painting, because corn flour will only allow it to smudge. If you use too much corn flour on fondant before you start painting it, your corn flour will smudge the entire surface of the fondant. All right. Light. Light one. So I'm just lifting her towards me. When I lift it, I actually see better. So the angle is better for me. And also see, I sometimes see the paper also so that I don't go wrong. Oh, she's already looking beautiful. है ना? देखो धीरे धीरे बनती जा रही है. And there is no credit that I will take because I have traced her. सब कर सकते हैं ट्रेसिंग करके. In the meantime, you will see how beautifully it will also start drying from the sides. I'm just filling the eyes. ठीक है. Now I will color the lips. So detailing, there is no end to doing the detailing. It will depend on how much you want to work, like how much detailing you want to do. So for the lips, I'm using red color again. Like the same skin color looks like red color, and you can add in a red color, gel color also.
If you have any questions, please post. Be very gentle, slowly paint करो. बाहर निकल गए smudge हो जाएगी तो उसको control करना will be difficult because it's red color. It will show. It will. Now, एक बार ऊपर देना. Let it dry for a while. देखो यहाँ तक मैंने किया है. This is how it's looking right now. So one thing I have to explain before we further go ahead. So Indu, you can also do it. Please try out and show me how you're doing it. So now whenever there is something, when we paint, we have to understand few things. Okay? There is a light area and there is a shadow area whenever we paint. So suppose you look at my face, this part will have maximum light. Why? Because this is the lifted part. Okay. Now this area will be shadow area. So whatever object there is in the universe that you can see through your eyes is because it has a light area and a shadow area. If it was completely light, flash of light, you won't be able to see it. So anything that you draw, just keep this in mind. मैम ने बोला था कि एक light area होती है, एक shadow area होती है. And the light source also is from one side. And you see this side is more brighter than this side. My face. And I have this area which is the shadow area. That is how the face looks. अगर ये भी पूरा सफेद होता तो फिर you won't see the outline of my face. So when we are doing her, नीचे करो. So just understand these things. Gradually कर पाओगे धीरे धीरे. So we need to increase the shadow areas also. Take a little skin color mixed with a little brown so that you get a darker shade. देखो, थोड़ा सा skin and थोड़ा सा brown mix किया मैंने. And if you see under her chin, can you see the shadow area? Right? So we'll do that shadow area. Questions? Yes, you can take the questions. नहीं करना. Not part of the class. Let's focus on what we are doing. You can, of course, do it, but the technique is different. And this is the collarbone. थोड़ा सा इधर इधर भी shadow कर दो. And then हम jewelry बनाना start करेंगे. Now, how are we going to make the jewelry? All right. Itna hai, so we are happy with the shade that we have got. The nose line, I'm just blending in a little. Nostrils को थोड़ा सा highlight करते हैं. The way it's there in the picture. So once you shade it well, it will really be a savior for you. So shading, tracing अच्छे से कर लेना, not shading. Once you trace it well, it will be a savior for you. Now I'm using the same pearls that I have shown you the other day. I'm using the same pearls to make. Okay, let me just do one more coat first quickly. एक और coat कर लेती हूँ मैं दुपट्टे पे. Like I said, once it dries out, you can do a second coat also, right?
Okay. So why did I do it this roughly? I'll show you why I've done this blouse roughly. See. So why am I doing this blouse roughly? The dress, I'll show you. I'm doing it very, slowly, so that you all can understand. And you will see when we add evaporates how beautifully it dries out. देखो, सारा paint जो मैंने लगाया था वो dry हो गया है. Nothing is coming off in my hands, right? Bright color दोनों इसकी lid के ऊपर देंगे. I have to change the water also. Now let's start with the Mountica, okay? So suppose you see this, you don't have to exactly copy the jewelry. You can, I'm not saying you can't, but you also have to check what you have handy, right? आपके पास pearls कौन से हैं वो भी देखना जरूरी है. Pearls दे दो मुझे. पहले jewelry बता दी ना. फिर धीरे-धीरे और finish कर सकते हो. I'll take the question answer. सारे दे दो. I don't know what I'm going to do. So we have this green beads, then this white ones, then this gold ones, then some red. क्या कलर यूज करूं बताना. ज्वेलरी डिजाइनर जो है यहाँ पे, because I am very bad at jewelry design. So what color jewelry should we give her? Of course we'll do a touch of gold. Bolo. Pearl and gold. Gold and red. Green with gold. Red and gold. मेरा दिमाग घूम गया, सिर घूम गया मेरा. So many combinations. Fondant red. So I have these colors handy. Tell me from these colors. Okay, let me start doing. I'll see randomly where to do. Okay, first thing, nozzle the grid. Now, we will start with the Mountica. So to first make the Mountica, we don't want to make everything flat. Flat is boring, okay? Welcome to Sangeeta Mam's class. We'll make it super interesting. इसीलिए हमने ये चीज जो है वो हमने बहुत roughly color किया है. I also colored the dress roughly. Why? Because I'm going to make this 3D. I'm going to make this 3D, and the jewelry also 3D. Then it will look nice. What do you think? Right? क्या लगता है? ये नहीं, ये कलर नहीं छोड़ते. Now see how I'm going to do the jewelry. I'm going to do it super shortcut. तो पहले एक fondant का patch ले लीजिए. Why am I taking yellow? Because we want to make gold jewelry. मतलब because the base color will show. So we take yellow and we take a nozzle. Check the size of the nozzle that it fits here. I think it's very big for my this thing. So I'll need a smaller nozzle. एक छोटा nozzle बस है. बहुत ही बड़ा है ये. पीछे वाला बहुत छोटा है. In between चाहिए. ठीक है? So just see that if you have a nozzle or any cutter or anything that fits in the size of the Mountica. This I feel is going to be too big. All right. So we will do that. We will cut out a round circle. We are going to paint it gold first with luster dust, the way we have painted. Luster dust and evaporates. Remember? Yes. This size is good. See? Right? Easy method. Correct. Always making it easy for you. Look. ये राउंड निकल गई हमारी. रखो बाद में चाहिए. Now I will place it directly here, because once I do it, I don't want to keep fiddling around and keep moving it.
हल्का सा पानी लगाओ, the way we stick fondant, and fondant लगाओ. Now lasso dust. So again, using the same brands, I've already shared with you what I'm using, right? This is again glint, little evaporates. Similarly, we do it for the earrings also. Now, please, like I said, I'm good with cakes. I'm not good with jewelry design. So, मुझे जैसा आएगा मैं वैसा ही बनाऊंगी. Please मत बोलना मैम का कैसा बना है, बुरा बना है. Even if you feel so, बोलने की जरूरत नहीं है. ठीक है? पक्का? So, for the earrings, I want to take 2 round circles out of the same size. And maybe out like this. करते करते मुझे मतलब लगा कि ऐसे बनाते हैं. And then we can place it like this here. और एक इधर. Okay, so let's make it a little smaller because it's going within her dupatta. इसको थोड़ा छोटा बना दूंगा. Let's make it छोटा. So size is completely your choice. आप जैसा भी छोटा बड़ा बनाना चाहो. You want to make a round thing, make a round thing. You want to make a long thing, long thing. Or if you don't want to make it like this at all, I'll give you one more idea. Just take a ball like we did for arms and X-Acto. Now take an X-Acto, make it half, shape it. जैसे झुमके का shape होता है या drops का shape होता है, whatever shape you want, as per you want to design the jewelry. Okay, you want to make longer jhumkas, you can do that. You want to make smaller ones, you can do that. I want to do maybe something like this. Apply water and stick it. The surface is a little, fondant is soft, so it's sticking all by itself. Now gold paint. Again, the base color is going to be gold. We don't want to keep it yellow, right? No. Now we have the beads. Now. Dangerous. That is a good solution. So जैसा भी आपको पसंद हो वैसा आप शुरू करो. शुरू एक बार कर लोगे तो कहीं ना कहीं जाके तो खत्म होगा. दूसरा बोल देता हूँ या उसके कैप नहीं निकाल दो. I'm using this maroon color also I have. Right? Taking a bowl is always advisable. And you can start making. I don't know what I'm doing. Please don't ask what design I'm doing. ठीक है, मैं बस अपने हिसाब से लगा रही हूँ. And I'm not going to do a lot of detailing because jewelry design is not what I'm teaching you. Please feel free to do whatever you want as per the design. Okay. All is looking nice, वैसे तो. Okay, you want to see what I'm doing? एक लगा रही हूँ. I'm just placing one by one. I don't know what the color, whatever. Okay. Question answer लेते हैं. साथ I will keep on designing your jewelry. So let's start taking the Q&As.
and press it a little inside so that it doesn't come off. All right, always dig it in a little in the fondant. Hey, parrot. Anita, you have a pet parrot? He's also part of the class now. Wow. That was a gala time. We had a parrot too, but I was too scared. Oops. For, I'm not using anything, Harpreet. The fondant is soft. See, it's getting in easily. कुछ भी use नहीं किया मैंने. If you feel that your fondant is dry, use a little water to stick in the pearls. You don't need to use sharpening. Oh, not bad. Resin. Yeah, do we have any other questions? Please, let's take the questions quickly. Don't use Vidhi, use water. पानी लगाओ जैसे मैम लगाते हैं. Is it visible? Yours पे भी ऐसा ही कुछ करते हैं मैचिंग सा. Set what? This one. See, I'm walking directly on it. You don't have to set it. You can directly start walking on it. Just walk in an AC room. Like always, like I've always mentioned. अगर प्रेस कर दोगे अंदर, डिग कर दोगे तो निकलेगा नहीं. रख सकते हैं थोड़े टाइम के लिए, बहुत ज्यादा टाइम के लिए नहीं. ज्यादा नहीं डालना चाहती मैं इसमें कि ज्वेलरी नेक पे भी नेक पीस है ना. That I will show you, Radhika. Wait. वहां तक हम गए नहीं है ना अभी. I will tell you gradually. So I'm doing the neck piece also. If you want, you can copy exactly the way she has it. I'll just place it here and check. Oh, here's a Fondant here. So if your fondant is fresh, it will stick straight away. देखो मैंने कुछ पानी भी नहीं लगाया इसमें, but it's sticking. Can you see this? Again, doing a coat of gold. अभी just don't bother me. देखो क्वेश्चन देखो. The painted fondant as in this one. No, you don't have to. Ritu, by the time you will be doing all the jewelry and everything, the paint will dry out.
So you don't have to dry the fondant as such, but the paint has to be dried, of course, so that it doesn't come off into your hands. If pearl is here and there, then you pick out the pearl and you can place any other pearl that you want of your choice. Green color. So I don't want to like make all with color. I can do some texture with nozzles also. So you don't have to always put in like a lot of pearls. Do whatever designing you want to do. I'm just doing it very randomly. Okay. If I have to do it for a client, of course, I will have a better plan and a little more time to work on. इसके नीचे भी आप एक ज्वेलरी बनाना चाहो, feel free to do it. Okay. Now then there is another bindi that I see. We have red gel color, red color paint. Okay. Okay. Now we will do a little makeup also. Luster does देना इससे निकाल के दो. So because she is a bride, we have to give her a little makeup. So take this luster dust, dip your brush directly. Now for the eyelids, you can do it directly. Yeah, आप इसके ऊपर gold भी कर सकते. I think gold will look better. I'll do a gold. देखो कैसे plan change होता है. Because luster dust is pink. I think gold this one. With a little evaporates. If you put it dry, it's not showing. So add in with a little evaporates and wow, this is nice. Ooh. हाँ प्लीज क्वेश्चंस है तो करिए. The class is about fondant. If you ask such confusing questions, not just me, your entire batch is going to get confused. If I am working with gel colors, I told you 1,000 times that gel colors are for fondant and gum paste. Radhika, अगर इस क्लास के अलावा कोई क्वेश्चन आंसर है, please hold it. When we take the live Q&A, then you can ask. Now the question should be completely, you stick to this module that you're doing. Okay. Now you will see she's the bride and she should have a bindi. So I'm using the back of my brush, or you can take, best is to take a balling tool. So to the balling tool that we have, this one. Dip it in red color and give her a bindi. All right. Now we will do the 3D. अब मैं और ज्वेलरी नहीं बना रही, बहुत हो गया ज्वेलरी आज के लिए. Okay, आप थोड़ा और heavy बना सकते हैं. And one more thing that the Indian brides have, what is it? The nut. Right? Without the nut, she will look a little incomplete. So you can feel free to use a circle thing to make the nut. I'll just make a round circle. Oh wow. Now she's looking like a bride. I'll just show you. So make one round ring. है ना, नथ पहनते हैं भाई brides.
And designing is completely your choice. नथ पे भी आप क्या डेकोरेट करना चाहते हो, क्या लगाना चाहते हो, is completely your choice. नथ दिख रही है? You see this? Now we will take red fondant. Our job is almost done. Now what we'll do is, first thing is to cut her out. बेस से उतार देती हूँ. My team is telling me, मैम बेस पे मत काटिए. ठीक है? लो. पूरा दिन टेबल पे काट काट के मेरे सारे टेबल स्क्रैच कर दिए. Now she's laughing. I am not allowed to do anything without their permission here. They bully me. You don't know how much they bully me. Don't give me looks. Ah, nice. Already इतनी प्यारी लग रही है जब when we take it out, right? Fondant देना. Now. Basic है, इस पे रख के दिखाऊंगी. Now, few things that you can do is roll it out a little and then cut it from the middle. And आप ये करके ऐसे इसको stick कर सकते हैं. Apply water first. It's although it's sticking because it has evaporate, so it's kind of little mushy and it's sticking. But आप थोड़ा सा पानी लगा लेना, हल्का सा पानी लगाओ. इसलिए मैंने इसको finish नहीं किया था. So this curve part, I'm placing it with the curve and then pulling it a little because fondant has a lot of room that you can pull it this side. Pizza butter. See the difference between both the sides? और थोड़ा ना ये 3D look भी देगा फिर आपको. On the other side, roll it. Now. So excess है तो चिंता मत करो. Just place it like this and we can trim off the excess always. Just mark where the lines are. देखो ऐसा mark करिए कि यहाँ पे ये finish हो रही है. This side, this is finishing, and then you can trim off, right? Now roll out fondant as a long piece and cut it from the middle like this to be able to make her wear this. Followed? Didn't follow. Okay. Roll out fondant like a long piece. Keep it a little 3D. Don't make it too flat. थोड़ा सा 3D रखेंगे. Oh, make kala tikka also, Vaishali is saying. Yes, I will give a kala tikka. Okay. Now
दो पार्ट में हो गया. Apply water. Paste it, keep going and keep pasting. Because see, chunni will be always over the head, right? अब हम क्या करेंगे? Mark where this thing has to end. And tuck in. Give it the shape. I'll show you what I've done. It be organized. White this thing should go now. Now, this is how she looks. थोड़ा और कुछ बाकी है. Now she will have, see, ये ब्लाउज के मार्क्स होंगे ना, ये this one and this one, so we can give this detailing. इतना तो हम देख के हाथ से बना ही लेंगे, I hope. And then I will take a little gold. थोड़ा सा shiny बनाते हैं इसको. So what we can do is, we can do a little border on here. Right, and also on the chunni. Chunni ka border hoga na, you will see how different it looks with the detailing. Now we can make छोटू छोटू सा design. Any embroidery, zari work, whatever is done, whatever. Right? बहुत ही प्यारी लग रही है. See, I'm not taking a lot of color, whatever is there on the brush. थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा छोटा. ठीक है, समझ में आया? Now jewelry you could make elaborate, and then whatever you want to make a different design dress, what you could do that. All right. Now how are you going to place her? अब इसको केक में कैसे लगाएंगे? क्योंकि हमारी तो बन गई, लेकिन ये फ्लैट बनी है. Now how are we going to place her on the cake? Okay. So for this you can either place it on a whipped cream cake,
If you scroll down my Instagram, you will see we had made a similar bride, which I had placed on a red whipped cream cake. I need a screenshot of that. Kal, nikal ke rakhna. All right. I hope everybody is listening. So we did that red color whipped cream cake. You can place it on a whipped cream cake. You can place it on a ganache cake. You can place it on a fondant cake. All right. I'll show you how to place it. एक बार camera open करना पड़ेगा. So this is the same square cake that we have done. And this is a dummy. We have draped the dummy in black fondant. Take the camera a little back. Or is it visible, everyone? Bas. Now this is the same smash cake that we had done in the class, and then this is my dummy that is draped in fondant, black fondant. Okay. Now to stick it on whipped cream cake, please write down. To stick this fondant bride on a whipped cream cake, you don't need to apply anything to the whipped cream cake. You just need to set the cake for 4 to 6 hours in the refrigerator. Overnight hai to aur acha, and then just lift it and place it. Now for ganache cakes, you need a little water on the surface of the ganache cake. Agar yahan lagani hai to thoda pani lagayenge and bride laga denge. Now because this is a fondant cake, we need a little shortening. And देखो ये eye भी dry हो गई है अच्छे से ना. All right. Now if you're not using it, you can knead it again and reuse the fondant. So you can actually practice. ये soft है, इसका dry loss नहीं है, so you can keep it, reuse it. It will give you a beautiful marble. और अगर अच्छे से नीट करके रख लेंगे तो ग्रे कलर हो जाएगा फॉन्डेंट का, because we have used black color to it. All right, now yeah. Now the same shortening that I told you, right? Taking it out a little and thoda thoda laga lo, bahut zyada nahi. Because we are going to place it on the front of the cake. Okay. And now, how are you going to lift her? Seriously, मतलब जल्दी बनी है लेकिन अच्छी बनी है. So now you're going to place her like this. ऐसे रखो. Don't stick the sides. We want to keep it open. Otherwise, the shape will change. Don't stick the edges. I know. प्यारी तो है. बस एकदम ड्राई है, हाथ में कुछ नहीं आ रहा. Now, इतने में ही हम खत्म नहीं करेंगे. I'll show you a few more things that you can do. You have to make the remember the flowers that we've done. अगर थोड़ी सी शॉर्टनिंग निकली हुई है ना, you can rub it off. थोड़ा सा ऐसे हाथ के साथ ही वो स्मूथ हो जाती है. Now,
So I'm going to place the sugar glass and show you how this cake looks. If we have to make it into a, है ना? लगाते हैं इस पे? What do you think? Camera में देख के लगाना is really difficult. Can I turn it towards me a little? Or maybe I come closer there. Better. मैं देख रही हूँ पहले टेस्ट करके क्या कहाँ पे अच्छा लगेगा देना. So I'm putting it in the dummy. If it's a cake, oh, it's going in the dummy. If it's a cake, it's easier actually. Dummy थोड़ा hard होता है. हो गया? Okay, that's why I always love working with real flowers. Wire though. So to place your flowers, you take a wire like this, bend it from the center to make it like a U-pin. ये देखो. Can you see it visible? And then put it in. दिखा दो बेटे. Like this. Put it in. अब ये स्क्यूअर आप छोटा बड़ा कर सकते थे, but मैंने ऐसे ही लगा दिया. I don't want to do anything to it right now. Oh my God. So beautiful. Okay. I'm making it into 2 bunch. So I'm taking the smaller flowers together and I'm going to twist it at the bottom to make it into a bunch. Extra wire काटनी है, काट लो. So pretty. And use that U-pin that I've got you. मैंने तो बहुत random flowers लगाए हैं. See, you could make it as per the theme also, okay? So I'm just going by what we have in hand. When you make flowers, please do it as per the theme of what your client wants. Because it's a dummy, I don't want to make it more tight because we have to take out everything. Give me a couple of leaves. एक आधा leaf भी लगा दो. Oh, nice. मजा आ रहा है कि नहीं बताओ? सच्ची सच्ची. Doable? Do you think you can do it? और नहीं लगाओ. Just to give you, oh my God. अच्छा, मैं बहुत excited हो जाती हूँ अपने काम करने के बाद, हाँ? So you should also be happy after you make it. See, तो easily कर लिया हमने, है ना? So if you practice, you can make the flowers ahead of time. You can do your square sharp edges or round sharp edges that I've taught you, and then you can do your painting one day, right? And nice, pura maza. Okay, so take a photo quickly because after today, no, उसको ऊपर कर दो because after यहाँ से नहीं next से ऊपर. After today, the sessions are going to be Q&A and business session tomorrow and photography session. So I'm keeping this cake. I'll show you how to take good pictures of this cake. That will be day after tomorrow. So take the pictures quickly and please tag me.
I love resharing when you tag with a message. This is really heavy, although it's only the bottom tier that's a cake. See how pretty she looks. Right? So, this will give you definitely more leverage. This will definitely give you more leverage when it comes to your account, when it comes to your portfolio. What I am saying, you will understand once you attend tomorrow's business session. Okay. And after tomorrow's business session and tomorrow's Q&A session, we will have our last Q&A tomorrow. So, jitne bhi notes aapko banane will take a half an hour's Q&A tomorrow also. And before we leave, we'll take today's Q&A. And on the last day, which is going to be the 10th day, I will teach you how to take good photography for your Instagram. And also teach you Instagram marketing. Okay? Chalo, let's do Q&A. Give me 1 minute's time. Let's do the setup quickly.
So should we start? We have question answers. Questions, answers I will do. Do we have any questions today? Raise your hands quickly. आज तो किसी के भी हाथ नहीं. अच्छा, हाँ, अनीता. Let's go with Anita. Yes, Anita. अनम्यूट करिए. नहीं सुनाई दे रहा. I can't hear you. You have to unmute. नहीं हो पा रहा. अनम्यूट का ऑप्शन एक बार देखना क्या करके. Yes, ma'am. हाँ, बोलिए. What will be the price for the bride? नहीं. Oh, I was talking to Anita Singh. Anyways, any Anita would do. Anita Singh के पास बाद में जाते हैं. There is no difference in price that you take depending on the amount of fondant and time you invest in it. Take out the Excel sheet for pricing first. Okay. Thank you. Okay. हेलो मैम. हाँ जी. हेलो. मैम मैंने अभी 2 दिन पहले ही क्लास ज्वाइन की है, पर 2 दिन की ये जो क्लास की कल की और आज की मजा आ गया. थोड़ा कुछ रीजन की वजह से नहीं अटेंड कर पाई. कोई बात नहीं अनीता, इसलिए हम आपको सारी रिकॉर्डिंग्स दे रहे हैं. Yes, आपने ग्रुप में देखा होगा कि सारे रिकॉर्डिंग्स सिर्फ नहीं, वी आर आल्सो गिविंग यू द लिंक ऑफ ऑल द रिकॉर्डिंग्स दैट वी आर शेयरिंग. सो गो थ्रू द क्लासेस. ओरिएंटेशन सबसे पहले देखिए. आई विल गाइड यू. अनीता, आपको सबसे पहले ओरिएंटेशन देखना है. ओरिएंटेशन में मैंने सारा नियम कैसे करना है, कैसे जाना है, कौन सी वीडियोस पहले देखनी है, कौन से बाद में देखना है, गाइडेड इट नाइस. तो डोंट गेट कंफ्यूज्ड. यू विल बी इन द ग्रुप. सबसे पहले ओरिएंटेशन देखिए और एकदम फॉलो करिए उसको. ओके मैम. ठीक है. स्पंजेस के साथ स्टार्ट करेंगे. हाँ मैम, इस एक्चुअली में मैं 2 साल से केक बेक कर रही हूँ. मेरे क्लाइंट भी मतलब सब ले रहे हैं 2 साल से, लेकिन स्पंज में मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम है कि कोई कहता है कि मिल्क मेड वाला नहीं. आपके मैंने अभी देखे नहीं है क्या है, तो मैं आप मेरी रेसिपीज देखिए और सबसे पहला एक्सरसाइज जो मैंने इनको कराया था कि क्लाउड हटाओ अपना. सो स्टार्ट बेकिंग माय रेसिपीज. गर्ल्स आर डूइंग वंडरफुली वेल. बहुत लोगों ने अभी बहुत स्पंजेस बना लिए हैं एंड दे हैव बेक्ड ब्यूटीफुल स्पंजेस. ओके. मिल्क मेड वाले कस्टमर को पसंद नहीं आते, इसलिए हम नहीं बेक करते. हाँ, वही मेरे को थोड़ा डाउट हो रहा था कि टेस्ट तो अच्छा जाता है बट थोड़ा कॉस्टली भी हो जाता मुझे है. नहीं लगता टेस्ट अच्छा जाता है. एज होम बेकर्स इट्स नंबर 1 एक्सपेंसिव. नंबर 2 इट विल ऑलवेज हैव दैट मिल्की काइंड ऑफ अ टेस्ट इन इट. So Yes. that doesn't go really well with the customers. और अगर मिल्क मेड वाली रेसिपी सीखनी थी तो फिर तो YouTube में भरे पड़े हैं मिल्क मेड. यस मैम. अच्छा मैम, एक बात और पूछनी थी. जैसे ये अभी हमने ये ब्राइड लगाई है, इस पे तो हमने स्टैंड उसमें लगा दी. क्रीम केक पे भी अगर स्टैंडिंग उसमें लगाएंगे तो कैसे, उसके पीछे क्या ऐसे ही उठाएंगे और ऐसे ही लगा देंगे धीरे से. गिरेगा तो नहीं वो? कुछ नहीं होगा. आपको तभी मैंने बोला इंस्टा पे जाओ और थोड़ा नीचे स्क्रॉल करो. कुछ एक साल पहले मैंने बनाया था. इट्स ऑन व्हिप क्रीम. रेड कलर की केक होगी. ऐसे ही डायरेक्ट लगा दूंगी? हाँ, डायरेक्ट. ओके मैम, थैंक यू. थोड़ा थोड़ा से प्रेस कर देना अंदर. ओके मैम, थैंक यू. मतलब पहले फ्रॉस्टिंग करके सेट योर केक इन द रेफ्रिजरेटर फॉर 4 to 6 hours. Then it will hold. Nothing happens. ओके, थैंक यू मैम. Thank you. अच्छा लगा. Thank you so much, Anita. गगन जो. हेलो मैम. हाँ जी, बोलिए. ब्राइड बहुत अच्छी बनी है. थैंक यू. मैम इससे अच्छी बनानी है आपको. मैंने ज्वेलरी शॉर्टकट कर Okay, दिया है. आपको एकदम ब्राइड वाली ज्वेलरी बनानी है. मैम मैंने साथ साथ ये Wow! बनाया है. So beautiful, गगन जो. लवली. थैंक यू मेरा मैम. क्रिएटिव बच्चा है. बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा. मैम मेरे को ना एक डाउट है अपने पुराने स्पॉन्जेस को लेकर. जैसे मैंने ये वाली बेक करी हुई है चॉकलेट. चॉकलेट हमेशा अच्छी बनती है, बट जब वेनिला की बारी आती है, मैंने कल फोटोज भी भेजी थी, उसमें ना ऐसे मोरिया मोरिया से होते हैं, वो टेक्सचर नहीं होता जो चॉकलेट में मोरिया जाली मोरिया? बनती है. दिखाती हूँ मैं आपको. वो- जैसे ये देखो. ये क्या है पता है? ये आपके एयर बबल्स है जो आपने अच्छे से टैप नहीं किए. सी, लुक एट दिस. दिस इज ब्यूटीफुल क्रम. मुझे पता नहीं वहम रहता है, पता नहीं क्यों मैं इस करके ऑर्डर भी नहीं ये लेती करो कि मेरे वनीला साथ. स्पॉन्ज चलो, वनीला मैं स्पॉन्ज बताओ. कच्ची है, पता नहीं क्यों ऐसे लगता है. नहीं, क्रम इज ब्यूटीफुल. यू जस्ट नीड टू टैप इट अ लिटिल मोर. बीच बीच में जो होल से दिख रहा है, इट्स एयर बबल ट्रैप. अब मुझे मुझे शायद ये था कि मैंने घर की कर्ड यूज किया, तो आज मैं रेडीमेड ऐसा कर्ड कुछ लाई नहीं हूँ. है. मैंने घर की, बाजार की, सब यूज करके देखिए, कुछ नहीं होता. आप टैप कर लेना अच्छे से. एयर तो बबल्स टेस्ट निकाल. इसका मतलब बनने के बाद पूरा पता लगेगा जब हम इसमें फ्रोस्टिंग कर देंगे. नहीं,
स्पंज का टेस्ट आपको अच्छा नहीं लगा? मेरे क्लाइंट्स तो पागल है इसको। मेरे को पता नहीं क्यों ऐसे लगता है, इससे कच्चा है, पता नहीं क्यों लगता है। कच्चा तो नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। तो फिर आप एसेंस कौन सा डाल रहे हो? एसेंस मेरे पास अजंता का था, अभी अभी मैंने ऑर्डर वेरी किया गुड। आज, अजंता ओसोरो इलोरा का। डालोगे तो ऐसा ही होगा। चेंज करो यार। ओके मैम, आप ओसोरो एक का बार ले ट्राई या करो, उसका? ओसोरो का एक खरीदो, चलो सारे नहीं लेने की जरूरत है। मैम मैंने वो जस्ट बाय सैंपल वन। पैक है ना उनके पास 10 ml वाले, मैंने छह सैंपल के पैक छह ले लो, कर लिए। बेस्ट है सैंपल पैक। 6 कर लिए मैंने ऑर्डर, जो आपने बताया था। फ्रेंच वनीला ही बेस्ट है ना उसका? हाँ, उसका नहीं, उसके सारे बेस्ट है यार। मैं तो नहीं मेरे नहीं तो मैम, वनीला में। वनीला में फ्रेंच वनीला इज वेरी वेरी ठीक है। गुड। ओके तो मैम, अभी मैं और फिर बेकिंग दोबारा। मत करना। लेट द एसेंस कम देन बेक इट। कच्चा बिल्कुल नहीं हो सकता। आपके क्रम्स इतने अच्छे आए। मैम टेस्ट में मुझे लगता है कि जैसे ना, ये देखो वो जैसे ये। अजंता हटा के फेंकना जरा। ठीक है। ठीक है मैम, दोबारा ट्राई करके फिर फोटोज भेजूंगी। हाँ बिल्कुल। अमेजिंग क्लासेस मैम, थैंक यू। थैंक यू सो मच। ओके, नेक्स्ट इज राधिका। हाँ राधिका, क्या क्या क्वेश्चन पूछे थे, पूछना। कहाँ के क्या हाय पूछना? मैम। हाँ बोलिए। एक्चुअली मैम मैं पूछ रही थी कि अगर हम लोग को व्हाइट चॉकलेट पे मान लीजिए पेंट करना है, फॉर एग्जांपल अगर गनाश केक है और डायरेक्टली उस पे पेंट करना चाहते हैं, तो कौन से कलर्स यूज करके वी कैन पेंट ऑन द गनाश जेल केक? कलर्स, ऑलवेज जेल कलर्स। तो जेल कलर्स क्रम, अच्छा ओके, ऑलरेडी सेट है गनाश। हाँ ऑलरेडी सेट है गनाश, तो सॉरी, मेरी नो भांजी प्रॉब्लम, है नो ना। प्रॉब्लम। बच्चे वैसे भी ज्यादा तो पसंद करते हैं मेरे क्लास को। हाँ, उन्हें उसे बहुत मजा आ रहा था आपको पेंटिंग करते हुए देख के। तो मैम गनाश ऑलरेडी सेट होगा, तो जेल कलर से उसको कुछ हैम्पर भी नहीं होगा, तो डायरेक्टली वी एक्चुअली कैन डू इट। गनाश पे ना डायरेक्टली हम करते नहीं है। हम उस पे, ओके। हाँ हम उस पे हमेशा ही फॉन्डेंट से ही करते हैं। तो अगर ओके आप गनाश पे करना चाहते हो तो गनाश पूरा सेट है, टेक इट आउट इन योर एसी एनवायरनमेंट एंड देन पेंट इट। ओके, बट एडवाइजेबल इज टू डू इट ऑन फॉन्डेंट एंड ऑफ देन कोर्स, स्टिक इट। ऑलवेज जेल, कैंडी ओके कलर्स, दीज विल वर्क। ओके ओके। also ma'am, like you made a bride, right? And this is for a bridal cake, मतलब wedding cake kind of thing. अभी छोटे orders है, तो how much like can we charge for these hand painted? No, it's not like that. It's like how, what is the filling, what is the frosting. Lemon blueberry is going to be different. Pineapple is going to be different. Vanilla is going to be different. Then you can add on, charge like 300, $500 for if you get a good finishing on this. And then if Okay you have sugar okay flowers, charge 50 rupees, 100 rupees, depending on your finishing of the flowers. That means you can keep oh adding on. okay 50 rupees okay, का आप, I would suggest एक खरीद के फ्लावर ना लगा के you give them something like this. And this is something so like that, easy yeah. to, was it easy Yeah or yeah not? yeah, Tell me. yes yes yes. It was super I missed the easy. class yesterday because I was traveling, In but fact, you थोड़ा can थोड़ा make मैंने these जो देखा है तो single नहीं petals. Yeah, you can make these single petals. I'm talking to everybody here. So make these single petals, dry them out and keep them airtight box. Keeping them is going to be easier. When you need to use it, bind it then. that's a great idea. Right? Storing is Yeah, this also will going to save be lot very of easy. time. Yeah. Save time also when we have to give Hmm. it to the customers. Okay. Also, one more thing, ma'am. Like we have painted the bride or our fondant today, and we have to give it to the customer tomorrow. So we can do it today and give it tomorrow, right? मतलब वो Of hard हो जाएगा, course, ऐसा give it कुछ, after ऐसा 5 कोई इशू days. नहीं है. Okay. And we are इसलिए not हमने using टाइलर्स नहीं ऐड tylose. किया ना इस पे. हाँ हाँ. Okay okay. Got it. Otherwise, Okay, what ma'am. will happen is if you make the bride flat, listen everybody carefully. We did not add tylers to this bride because if you want to make it prior time and keep it and place it on the cake tomorrow or day after, if you have tylers in it, once you lift and try to stick it like this, it will start cracking. It will have fine lines all over. Hmm. So Okay. advisable is as soon as possible you do it. Amisha, I hope you've got the measurement, sponge measurement. I've passed it on to my team. They will share it with you. How much batter to go? Okay. All right. Now we have Megha. Okay, that's all. Thank you, ma'am, and thank you for the lovely Thank you, classes, Radhika. ma'am. Thank you. Megha. हेलो मैम। हाँ जी. मैम आपने जैसे ये ब्राइड को शॉर्टनिंग से स्टिक किया इस पर, तो वाटर से भी कर सकते हैं? Water से कर सकते हो, but what happens is when this is fondant, the surface, and you are sticking a heavy topper on fondant, water might, it might just fall off. So it's better that shortening has a body. Thick होती है, तो वो अच्छे से stick रखेगी. अच्छा, तो But if आपने it's on इसी ganache cake,
If it's on the ganache cake, अगर ये पूरा ganache का होता तो पानी से आराम से स्टिक हो जाता। ओके ओके, सो हैवी टॉपर की वजह से आपने इसमें शॉर्टनिंग ऐड किया पीछे, वरना वाटर से भी ताकि वो स्टिक हो अच्छे से जाती है stick, ना। हाँ, शॉर्टनिंग थोड़ी सी थिक होती है ना। या ठीक है, ओके मैम, बस यही पूछना था। ओके, थैंक यू। हरप्रीत आ गया। हेलो बोलो, मैम। आज क्या लाए हो सांबा? आज मैम कुछ ज्यादा नहीं है, थोड़ा ही है। थोड़ा ही? ऐसे क्यों? हाँ। बोलो। मैम आपने शॉर्टनिंग फाउंडेड में यूज की है वाइल नीडिंग? आप देखो, वाइल नेलिंग हम तभी ऐड करेंगे अगर फॉन्डेंट मेरी ड्राई है तो। अगर मेरी फॉन्डेंट ड्राई नहीं है तो हम ऐड नहीं करेंगे। इसमें ऐसा कोई रूल नहीं है दैट यू हैव टू ऐड शॉर्टनिंग टू इट। Only if while kneading, when we start by kneading fondant. If you feel that it's dry, add shortening. Otherwise, don't add. मैम एज यू सेड डोंट यूज कॉर्नफ्लोर, सो I कॉर्नफ्लोर मेक्स said इट। don't use. Nahi, don't misquote me. I said don't use a lot of corn flour. ओके ज्यादा नहीं यूज करेंगे। ज्यादा यूज करेंगे तो when you try to paint it, it will bleed. उसमें corn flour के particles होंगे and it will spread the color. ओके, वी कैन यूज लिटिल अमाउंट। Of course, little. जैसे मैं हाथ में लेके थोड़ा सा यूज करती हूँ ना, that's fine, but not too much. Because I ओके मैम, see you take fondant आटे की लोई की तरह ऐसे ऐसे करके फिर उसमें रोल, then it will bleed badly. मैम इसमें टाइलोज ऐड नहीं किया तो मैम ये स्ट्रेच हो पाया, हो पा रहा, मतलब स्ट्रेच जो फाउंडेंट आपने रोल किया। टाइलर स्ट्रेचिंग के लिए होता है क्या हरप्रीत? फॉर ड्राइंग एजेंट, इट्स अ ड्राइंग एजेंट। ओके मैम, जो केक ऐसा आपने नहीं बनाया, करना है। हाँ, मैम और ये कुछ? जो मैम ये जो केक है डमी है, मैं इसमें फाउंडेंट है हाँ, ये आपके, डमी है। तो डमी के ऊपर मैं ये फाउंडेंट लगाया आपने? ब्लैक कलर का फॉन्डेंट लगाया ताकि आपको थोड़ा सा लगा के दिखा पाऊं। इतना बड़ा केक बना के फायदा नहीं है। आई ऑलरेडी हैव दिस केक, सो आई जस्ट यूज दिस एज अ व्हाट टू से, a canvas to be able to place to show you how you can place them on cakes. ओके मैम, फाउंडेंट के ऊपर हम फाउंडेंट लगाएंगे तो हम शॉर्टनिंग यूज करेंगे? शॉर्टनिंग लगा सकते हैं, पानी लगा सकते हैं। मैंने अभी बोला मेघा को, फॉन्डेंट के ऊपर ये हेवी टॉपर था इसलिए मैंने शॉर्टनिंग लगाया। पतला टॉपर होगा तो पानी भी लगा सकते हैं। और मैम नीचे वाला केक तो गनाश का है, जैसे आपने कहा हमने बनाया, तो इसमें भी फाउंडेंट लगा हुआ है? तो पानी से लगा सकते मतलब नीचे भी फाउंडेंट लगा हुआ है, यही पूछ रहे हैं। नहीं, ये तो गनाश है, देखो ये तो चॉकलेट का ही कलर है। अच्छा इसमें कुछ नहीं लगाया मैंने, बिकॉज इट्स एनीवेज वी आर गोइंग टू रिप दिस ऑफ राइट नाउ। क्लास के बाद ही, आज नहीं, वैसे वी हैव टू कीप इट फॉर 2 more days क्योंकि मैं आपको शेडिंग दिखाऊंगी, आई मीन फोटोग्राफी सेशन दिखाऊंगी। उसके बाद हमारा कोई काम नहीं है, काट के खाएंगे मेरे बच्चे। ओके मैम, दैट्स इट। ठीक है, ओके। ओके नेक्स्ट, बच्चे मतलब मेरी टीम, ऐसे तो मेरा एक ही बेटा है। नेक्स्ट वी हैव सीमा। सीमा, यस। मैम जैसे अभी ये केक है तो वेडिंग केक में स्टेंसिलिंग, जैसे कोई क्लाइंट बोलता है कि स्टेंसिलिंग चाहिए गोल्ड का, तो फॉन्डेंट पे कैसे करेंगे और गनाच पे कैसे स्टेंसिलिंग करेंगे? इज नॉट पार्ट ऑफ दिस केक सीमा। अगर स्टेंसिलिंग सीखना है तो वेडिंग के क्लास में आना पड़ेगा, ओके थैंक यू। या फिर मेरी रील बाकी देखनी पड़ेगी, उसमें भी फ्री में सीख सकते हो। ओके थैंक यू मैम, ठीक बहुत है, अच्छा बना है। थैंक यू सीमा, थैंक यू। ट्राई करना और मुझे फोटोज भेजना। ओके अभी आपकी थैंक यू मैम। क्लास ओवर हो जाएगी तो उसके 2 से 3 दिन में आपके ग्रुप खुल जाएगा। सो बनाओ, या तो ओके मेरी टीम को भेजो, दे शेयर इट विद मी जब तक ग्रुप नहीं खुलता, और ग्रुप खुलता है उसके बाद तो ग्रुप में भेज सकते हैं। ओके थैंक यू मैम। बट यू हैव टू हेल्प ईच अदर इन द ग्रुप, ओके? ओके थैंक यू मैम। थैंक यू। नाउ वी हैव दीक्षा। हेलो मैम, हाँ जी, हेलो, बहुत बोलिए। ब्यूटीफुल है ये। हाँ, सच्ची में बहुत प्यारी लग रही है। मैंने अपने हस्बैंड को दिखाया, बोला बहुत जबरदस्त फिनिशिंग है। सही लगा। पता है, jewelry, if you can make the jewelry a little with more patience and more time, हाँ because the focus was not on the jewelry, the focus was of course on hand painting, right? Otherwise हम और आराम से बैठे बैठे, if you can check on my Instagram when we make her, how we make the jewelries also, we take out time, design and then do it. अभी मैंने जल्दी कर दिया because इसको करने लगूंगी तो it will be a wastage of time. So when you do it, you can do a heavier jewelry as per the bride.
हाँ मतलब जैसे आपकी जो आपने जो मतलब प्रिंट आउट लिया था उसमें ना जैसे बॉर्डर जैसे इसका दुपट्टा है, दुपट्टे की बॉर्डर पे भी हम येलो येलो बॉल्स मतलब स्टिक कर लगा सकते हैं। तो सकते हैं, ये तो बिल्कुल, ये तो जैसे डायरेक्टली हमारी हमारी फॉन्डेंट है, खुद की तो इसी में शादी हिंदी में येलो येलो बॉल्स हाँ थे, तो ऐसे ही स्काई इज द ब्लाउज पे भी लिमिट, मतलब डिजाइन स्काई इज बना द बना के लिमिट, आप उसको यस। कर सकते हो। अच्छा ठीक है ओके। एक मैंने जो चॉकलेट स्पॉन्ज बनाया था उसमें ना जब मैंने उसको डीमोल्ड किया ना और अच्छे से कूल डाउन हो गया था, बट फिर भी वो ना मतलब फुल्ली डीमोल्ड नहीं हुआ, ब्रेक हुआ। दो हाफ हाफ दो बनाए थे, दोनों ही हुए। मतलब मुझे समझ एक्चुअली नहीं आता दीक्षा, कि जब हम डिमोल्ड करते हैं ना तो उसको फुल्ली कूल डाउन करके डिमोल्ड नहीं करते हैं, ओके चॉकलेट because स्पॉन्ज को। I'll tell you why. So when the हाँ cake is baked in a tin and we take it out in room temperature, I mean AC temperature or wherever, immediately there is a difference in the OTG and the difference हम्म in temperature outside. So the हम्म cake base will start having condensation, a lot of water हाँ and condensation. So when you हाँ allow it to come down to room temperature, you are actually keeping it for more than 20 minutes. So it's actually getting stuck in the bottom. So just keep ओके it for say 5-7 minutes until you can touch the tin. हम तो 3-4 minutes में ही demold कर लेते हैं. तो हो जाएगा, क्योंकि यूजुअली जो स्पॉन्जेस होते हैं ना अगर वो गरम गरम करो तो टूट जाते हैं। मतलब लास्ट जो स्पॉन्जेस मैं यहाँ पे बनाती थी वो उल्टा है. गरम। अच्छा ओके ठीक है। जब मैंने demold किया था, I don't know if you remember or not, I was holding it with a kitchen towel, a हाँ हाँ towel, हाँ 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 because the tin was hot, not warm. It ओके was hot. Warm होता तो मैं ठीक खाली है। हाथ से पकड़ लेती ना. हाँ हाँ सही बात है। ओके ठीक है. ठीक है। तो एक दूसरी मैंने जो कुकीज बनाई थी आज ना, मतलब वही सेम रेसिपी आपका, तो लेकिन आटा बिस्किट बनाए थे फिर से, वो शुगर फ्री वाले स्टीविया डाल के। तो उसमें मतलब एक तो फ्लैट है, मतलब वो ये पाइपेबल कंडीशन अच्छी बनी थी, लेकिन एक तो वो फ्लैट हो गई। और मतलब 10-12 मिनट में अच्छी ब्राउनिंग थी, लेकिन वो ना मतलब बहुत सॉफ्ट है। Soft और है. मैंने और मैंने आज कॉर्नफ्लावर ऐड किया था, थोड़ा वेरिएशन किया था, 1.5 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर ऐड किया था उसमें। उससे फर्क तो नहीं पड़ता. नहीं पड़ता, मतलब कॉर्नफ्लावर नहीं, का वर्क मतलब फंक्शन क्या रहता है? पाइपेबल कर देगा ना उसको, थोड़ा सा पाइपेबल टेक्सचर अच्छा देगा and it will give a body हाँ and volume to it. ओके। तो Maybe you're punching सॉफ्ट in with atta, that's why it's happening. So next time ओके cornflour थोड़ा कम रख के देख लो, because I have not baked with अच्छा atta. These cookies. ओके ठीक है। ये जो And वाली I जो would डमी, suggest make smaller batches, छोटे छोटे बैच बनाओ. हाँ मैंने 150 ग्राम ट्राई किया, हाफ का भी हाफ हाँ, रेसिपी ट्राई किया था कि मैंने कहा एक बार पहले ट्राई हो जाए, अच्छे 1/4 रिजल्ट आ जाए recipe देन। try कर लो. 1/4 recipe is हाँ good हाँ enough. It will give you around 8 cookies. हाँ मतलब ठीक है ओके। एक इसमें ना जैसे डमी का जो आप ये जो ब्लैक वाली डमी है उसका साइज क्या है मैम? Black वाली dummy is 5/8. ये सिंगल डमी है? Single dummy है. ओके तो मतलब इतनी टॉल भी आती है? हाँ, इससे भी टॉल आती है. अच्छा, हमें तो पता अभी देखना शुरू करा है। आप कस्टमाइज बनवा सकते हो. You can give them the size and they will give it to you. ओके ठीक है। एक ये जो आपकी जो एक्रेलिक डिस्क थी ना तो जो आपने फॉन्डेंट केक के लिए वो यूज करा था, तो उसमें जो साइजेस थे जो आपने ओम क्राफ्ट जो उनका नंबर शेयर किया था मैंने आपकी टीम में, उन्होंने मुझे शेयर किया था, तो उसमें जो उन्होंने शीट भेजी है उसमें साइजेस है 4.25 या 5.25 या 6.25। कौन सा, क्या मतलब, व्हाट? एक्रेलिक डिस्क का साइज हाँ, राउंड, जिससे आपने राउंड और राउंड स्क्वायर. और स्क्वायर You दोनों ask का them ही to था। make as per your size. They will make it. ओके। और दूसरा वो ना रोज का जो मतलब वो ना पूरा सेट ना पूरा ही दे रहे हैं, बैनर और नहीं उसका नहीं, कटर का। रोज don't buy from Home Craft. I had mentioned this earlier also. रोज कहाँ का से बाय? Home Craft से मत खरीदो because it's going to be around 1200, 1300, हाँ 1400 ऐसा कुछ 1200 price. You रुपीज don't मैंने need it. बहुत Buy it from हाँ Amazon. You will only get the उसमें winner. उसमें फिक्स नहीं होता ना, पता उस मतलब एक ना अरीफे करके शॉप है हैदराबाद में, वी आर Arif है, ऑल्सो वेरी। Arif हाँ Lamold. तो हाँ तो उनका मतलब उनसे भी उन लोगों को मतलब इतना डीप नॉलेज नहीं होता कि ये विनर कौन सा है, मतलब पता ही नहीं होता उनको, बस सेल दे हैव सेलिंग। तो उसमें कंफ्यूजन है कि आप मंगा भी लो फिर आपका वो पर्पस सॉल्व नहीं होता है। तो और हाँ जबकि नहीं, आप अमेजन में उनको फोटो दिखाओ ना कि भैया मुझे ये वाला विनर चाहिए. The photo that I have अच्छा given, shared with you for the rose, share it with them हम्म and tell them I need this winner. Or you can buy it from my offline students are buying from Amazon. So हाँ anything अमेजन पे तो हाँ close if you can ठीक get है will also work. ओके Don't buy the ठीक है cutter. We didn't use the cutter, right? मैंने कल भी फ्लावर वाले दिन हम्म क्लास में भी बताया that we don't need rose cutter. 1200 रुपए का कटर हाँ लेके क्या करेंगे? वही स्पेशली 1200 रुपीज सिर्फ बैनर के लिए पे Too करना मुझे, जबकि expensive. अच्छे से आपका बन रहा है वो।
दूसरे सनफ्लावर के लिए भी हम मतलब सनफ्लावर रोज की आपकी कोई रील है क्या? सनफ्लावर की आपको रिकॉर्डेड वीडियो मिल रही है? अब मतलब अच्छा ओके ठीक है। और उसके लिए डिटेल फिर आप वीडियो बटर, मिलेगी सनफ्लावर की। ठीक है, नो प्रॉब्लम, ठीक है मैम, बस दैट्स इट। ठीक है, ओके। ओके ठीक है, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट मनाली गुप्ता। यस मनाली, पहले वॉइस चेक। हाँ मैम आ रही है। हाँ आ रही है। चलो मैम, क्लासेस आर फैबुलस। मतलब थैंक यू सारी मनाली। क्लासेस में जो आप डिटेल्स बताते हो ना, मैंने 2-3 ऑनलाइन क्लासेस ली है, किसी में इतनी डिटेलिंग नहीं शेयर करते वेलकम टू अपने संगीता कुकिंग मंत्रा। अपने मैं वेंडर्स के एक्चुअली मनाली, कॉन्टेक्ट। थैंक यू। क्या अच्छा लगा आपको, बताओ। आई थिंक कोई प्रॉब्लम हो गई। नहीं नहीं, आई कैन हियर यू, ओके ओके। बोलिए। तो मैम बोल रही हूँ कि ये ना अपने वेंडर्स के कॉन्टैक्ट शेयर करना, यू आर शेयरिंग एवरीथिंग। मतलब कुछ है ही नहीं कि जो आप शेयर नहीं कर रहे, ऐसा कोई नहीं करता। आई हैव टेकन इट। मैं इतनी परेशान हो गई कि मैंने बोला ऑनलाइन है ना, सीख ही नहीं सकते, मेरे को पर्सनली जाना पड़ेगा। फिर आपका देखा मैंने इंस्टाग्राम पे, पता नहीं क्या सूझा, मैंने बोला कि चलो एनरोल करते हैं एक बार और लास्ट टाइम, एंड दिस इज द बेस्ट डिसीजन। Thank you so much. Means a lot, Manali. So this is how we have nurtured थैंक all our यू। students. क्योंकि ऑनलाइन में और डिटेल में पढ़ाना जरूरी है, because you guys are not here हाँ present with me. So it's very very important that we give you everything in detail. Otherwise, my team is also hats off to the team. Everybody. इसलिए मुझे थोड़ा बुरा लगता है जब कोई कोई मिसबिहेव करता है टीम के साथ, because they are working more than me. मेरा काम क्लास में फिनिश हो जाता है, but after that also they are continuously working for, you know, before the class also. Everything set up that you see, everything like I need this, I need this, I need this. They are. I will not say this. See, I've trained them, of course, but they are doing it every day for me. So यस मैम, I don't feel nice when somebody talks like that to the team. ऑब्वियसली ऑब्वियसली मैम। मैम मुझे एक प्रॉब्लम थी कि है ना, मैंने चॉकलेट केक बनाया था पहले वाला, तो वो तो डिमोल्ड किया था, पर फिर भी मैंने उसको क्लिंग रैप करके फ्रिज में रखा था। एंड है ना, उसका है ना, Look ये at the आज बनाया है picture. मैम, ये आज बनाया है अभी, ये ये बहुत बिटवीन सही द क्लास। है। थोड़ा सा जो ये सिंक हुआ है ना आपका, हाँ आप ये थोड़ा वाला। सा you can reduce a little more. ओके ओके, आई एम बेकिंग But इट ऑन chocolate 60। cakes में थोड़ा सा सिंक आता है कभी कभी, so it's actually हाँ for the oven. Don't bother too much. You can use it, हाँ you can tot it and use it. Put it in between हाँ। layers. कुछ नहीं और होता। मैम जो वनीला And का मैं है ना, texture उसमें से क्या बता हुआ, सकती हूँ, if you tot it, it's going to have beautiful crumb inside. It's looking beautiful. थैंक यू मैम। ये जो है ना फ्रिज में रखते हैं ना, तो एकदम ऐसे कट करते हैं ना, टॉट करते हैं, तो एकदम Dot. ऐसे टाइट टाइट हो जाता है। टाइट हो जाता है, वो कट करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती वो है क्योंकि प्रैक्टिस के चॉकलेट साथ होता होगा है। मनाली, वो थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस के साथ होगा। नहीं नहीं, वनीला में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही। आई एम हैविंग प्रॉब्लम इन दिस चॉकलेट केक बिकॉज शायद फ्रिज में रखते हैं ना, तो वो टाइट हो जाता है, चॉकलेट आप हार्ड हो डालते जाता हैं है। ना उसमें। हाँ अगर हार्ड नहीं होगा ना तो वो क्रम्बली हो जाएगा। हाँ। Yours is this? Wow. ये मेरा फर्स्ट था, इसके बाद मैंने एक और बेक करा है। आई हैव नॉट शेयर द पिक्चर विद यू क्योंकि मैंने Yesterday, इसको someone shared it on Instagram. Oh, Shivali, I think. Shivali had shared her sponges also, and you have also shared beautiful sponges you guys are making. मजा आ गया देख के। मैम Yes, और कोई क्लासेस any लेते हो other क्या? question? मैम और कोई क्लासेस लेते हो क्या ऑनलाइन? बिकॉज इट्स नॉट पॉसिबल टू कम इन दिल्ली। So we have everything online. Just let us know what you want to learn. I know if अच्छा see Manali. So the idea of doing this online class, this was my very first या boot camp online. I have been doing online classes since years now, but boot camp के लिए ये first time था. And because I took this plunge because I was getting a lot of requests to do online boot camp. But मैं यही सोच रही थी 10 दिन continuous. I'm tired. Honestly, I'm tired. And my son is unwell since 2 days. That's why I'm also not sleeping since 2 days. तो थोड़ा सा tight हो जाता है, but it's okay. When I'm in the class, so my team tells me, "Ma'am, आप अभी ऐसे हो, जब क्लास में जाओगे पता नहीं चलता." So I enjoy doing बिल्कुल the भी class. नहीं लग रहा, बिल्कुल भी नहीं लग रहा दैट यू हैव नॉट स्लेप्ट एंड यू हैव I'm a little crazy for the work that we do. तो ये madness थोड़ा सा होना जरूरी है, because otherwise you can't be true to your work. करो जितना करोगे ना उतना, when your customers start liking your work, when you get good reviews, you get यू charged गेट up. सेल्फ You get मोटिवेटेड। charged और करना है. या It's like a nasha. यस So I good. agree. It is the first thing that I have got interested in after
so much years, मतलब मुझे पता I चला कि would हमें suggest कितने Manali, interested हैं. before going into any other classes, wanting any other Yeah, I classes, have to the master this. request. But master, you have learned a Yeah. lot in this boot camp. I think I have touch base covered almost everything. If you try Yeah. all this, all of you, I'm telling you, earning a 50,000 amount per month is not difficult. Not Ma'am, difficult. one more question कि जब हम डिजाइन करते हैं ना, हमने अपने क्रीम केक्स या कोई भी केक्स, तो एक होता है कि जैसे क्लाइंट ने हमें बोल दिया कि हाँ केक चाहिए, तो देखने लग जाते हैं नेट पे डिजाइन वगैरह कि हाँ ये वाली सही है, ये वाली सही है, ये वाली सही है, एंड वी कॉपी दैट डिजाइन, वी ट्राई टू कॉपी दैट डिजाइन. तो मैम वो प्रैक्टिस से आएगा कि मतलब आप खुद अपना दिमाग चलता है कि प्रैक्टिस से नहीं क्या आएगा थोड़ा मनाली. If I tell you practice से आएगा, I will be lying. So you have to take a wedding cake class in which I teach a concept which will help you make your signature designs. Okay. That is part, because when it comes to wedding cakes, that is when customers actually, birthday cake में इतना ज़्यादा बोलते नहीं है, but when it comes to your tall cakes, wedding cakes, that is when your customer will want that Manali design a cake which is only made for us. Don't copy a design from the internet. That's why I teach that concept in my wedding cake class, in which every time you can make a signature design. Okay, तो मैम वो ऑनलाइन कब हो रही है, क्या है डिटेल्स? ऑनलाइन है, we already have that available online pre-recorded. You can take that. Pre-recorded. हाँ, Okay. जैसे हमारा स्पंज का भी pre-recorded session दिया है हमने आपको. It's like that. It's also super detailed. You'll be added in the group and you can post your queries. तो मैम मुझे अगर वो चाहिए तो मैं आपकी टीम को पिन कर दूं. आप मेरे टीम को ही कांटेक्ट करो, they will guide you. हाँ, okay. Thank you so much. Thank you Manali, thank you. It was very encouraging. Okay. Yeah, there are few questions. अवनीत मैम, मैंने भी केक बनाया था and कस्टमर को बहुत पसंद आया. I shared review. Wow, very good, lovely. Yes, ब्राउनी की भी recorded session मिलेगी. Mohani Gupta, yes, your hand is visible. Mohani, there are few more before you, so I'll take their questions. I'm going serially, okay? We'll go to Amisha. Hi, ma'am. Hi, Amisha. Hi. I had a question regarding the dowels that you need to put, the wooden dowels. Now, I haven't ever used them before, so I wanted, and I've not been making tall cakes, but recently I just made a 6-inch cake, which was taller than I thought it would be. So I realized, and I did it with 2 layers that you told that, just two. I thought that the top layer was sinking in. So do we use them to even balance the tall Yes, cake? doubling will actually keep your layers in place. Okay. They will. So suppose you have one cake. Suppose you have 2 layers of cake. Okay. Yeah. Now 3rd layer, 4th layer, and you put in dowels and set it in the refrigerator before you do the frosting. So this will keep the cake in place. Okay, so it's not only to take the weight of the toppings. No, it's not just the weight, balance also keeping it straight and in place. The dowels act as the spinal cord and the support, like the bones. Okay. So do we just need to add one, or depending on the size of the cake, you Depending have to on the add more? size. Again, detailed doweling is in our tier cake classes and wedding cake classes. Depending on the weight, depending on the size. That's Okay. there. All right. Okay. Thank you so much. Thank you. Thank you. We'll go to Vinny, then Mohani, then Shilpa. हेलो मैम. Hello, Vinny. मैम मैंने कुकीज ट्राई की थी, तो मेरा बेटर है ना तो रनी था और ना टाइट, मतलब थोड़ा डो ऐसा हाथ में अपन लड्डू बनाते और हाथ में पूरा ऐसा हो जाता है ना, उस टाइप पूरा का डो डो आ था. गया क्योंकि मेजरमेंट्स गड़बड़ होंगी विनी. मैंने हाफ का हाफ बनाया था, मतलब जो कोई आपने बात नहीं, मेजरमेंट. जब आपने क्लास में बनाया हाफ का हाफ बनाया था, मतलब आई मेड 1/4. अच्छा, एक जो बार भी और फिर बनाओ, ट्राई कर. आप हाफ का हाफ बनाओ या डबल का डबल बनाओ, इट्स गोइंग टू बी सेम इफ द क्वांटिटी इज सेम. तो बटर को मतलब डायरेक्ट फ्रीज से निकाल के यूज करना है या थोड़ा रूम टेम्परेचर पे लाके बटर यूज को करना है? वो रूम गड़बड़ टेम्परेचर हो पे आने देना है. डोंट यूज इट डायरेक्टली फ्रॉम द रेफ्रिजरेटर, इट्स गोइंग टू मेक योर डो टाइट. हाँ, वो सो हो वंस इट सकता है कम, किसी. वो गलती की थी. मेरे ख्याल से वो हो सकता है. हाँ, क्योंकि बटर ही है ना, ठंडा नहीं होना चाहिए बटर. इट शुड बी सॉफ्ट टू टच. ठीक है, सॉफ्ट ठीक है, होना चाहिए. और उसको बीट करना है एकदम लाइट एंड एयरी होने तक. ठीक है,
हाँ, ये एक बार और मैं एडिट करके और फिर छोटा बना के बैच देख बनाओ. लेती हूँ. हाँ, ठीक है मैम, थैंक यू. Because I see so many of you have baked the cookies beautifully. The measurement is absolutely fine. Okay. ठीक है, All the ओके मैम, थैंक यू. Okay. Mohani. हाय मैम. हाँ जी बोलिए. Hi. फर्स्ट तो आपने इतना प्यारा केक बनाया ना आज, बहुत ही सुंदर. मतलब मैं तो फैन हो गया. मतलब ऑलरेडी मैं फैन थी, मैं आपको बोलती हूँ. एक्चुअली मैं ऑलरेडी क्लासेस लेती थी. सबने कि है ना, मेरे पास आपके स्क्रीनशॉट थे. तो ये कौन है, मैंने कहा ये तो केक में ब्रांड है यार, इनसे तो सीखना बनता है. तो कुछ स्टूडेंट थे जो दिल्ली नहीं जा सकते, वो भी पूछ रहे थे. बहुत 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 अच्छा बनाते हो. Thank you so much, Mohan. It means a lot. देखो यही encouraging words है कि बिना सोए भी मैं आ जाती हूँ काम करने. So it works for me. It works for everyone like that. So encouraging words always keep us going. आपसे काफी चीज सीखने मिलती है, जैसे कितना पेशेंट होना, एंथुसियाज्म होना अपने काम के लिए. मतलब बहुत थोड़ा यही पागल चीज. होना वो थोड़ा चाहिए. हाँ. You have to have that passion क्योंकि कोई आपको धक्का नहीं देगा कि जाके करो 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 करो. It should be from within. मेरे हस्बैंड मेरे को यही बोलते रहते हैं, उनसे ये सीख, तू कितने पेशेंटली काम कर रही है, तेरे में है इतना पेशेंस. सब अलग है देखो. सब अलग है. सब एक जैसे नहीं होते. जब आप और करते रहोगे ना पेशेंस डेवलप हो जाएगी. बिकॉज ये बिना पेशेंस फिनिशिंग नहीं आती इस काम में. तो ये काम है ही पेशेंस का. थोड़ा पेशेंस डेवलप करना पड़ता है. जैसे आप फ्लावर बनाओगे धीरे धीरे बनाओगे. यू मेक अ फ्लावर और एनीथिंग दैट वी हैव टॉट यू, डू इट फास्ट एंड डू इट पेशेंटली. यू विल सी द डिफरेंस इन योर रिजल्ट ऑल्सो. वो रिजल्ट आउटकम में ही दिखने लग जाएगा. मोहन, आर यू हियर? आई थिंक या योर. मैम. हाँ ओके. ओके. तो मुझे क्वेश्चन था कि जैसे जो हमने इसको ब्राइड को स्टिक किया है इसके ऊपर, तो हम इसको स्टिक करके फ्रिज में रख सकते हैं? बिल्कुल सब कुछ रख सकते हैं. मैं रखूंगी आज 3 दिन इसको फ्रिज में. एक्चुअली मेरे साथ क्या होता है ना कि जब मैं फॉन्डेंट के कोई भी टॉपर लगा के फ्रिज में रखती हूँ ना, तो उन पे ड्रॉपलेट्स आ जाते हैं वाटर के. ये मैंने और ऑलरेडी फॉन्डेंट वाले क्लास पे बहुत डिटेल में समझाया. डिडंट यू जॉइन द फॉन्डेंट क्लास, फिगरिन क्लास, सेमी फॉन्डेंट क्लास? फिगर बनाए थे फॉन्डेंट के, बट उनको फ्रिज में नहीं रखा. मतलब सेमी उससे फॉन्डेंट पहले. क्लास, सेमी फॉन्डेंट क्लास हाँ नेक्स्ट डे जो मैम, हुआ था. हाँ वो मैंने ट्राई नहीं करी. फिगर बनाए हुए थे, केक पे नहीं, नहीं बट मैंने सेमी फॉन्डेंट क्लास में मैंने बताया था ना कि व्हेन वी प्लेस द फिगरीन्स ऑन द केक, of course we have to store it in the refrigerator. If we don't store it in the refrigerator, how are we going to do multiple orders a day? So once you keep it in the refrigerator, do not take out in room temperature. Take it out in AC always. इज देयर एनी रीजन कि मतलब कुछ हमसे गड़बड़ी होती है जिसकी वजह से पानी की बूंदें आ जाती हैं, या फिर नहीं, कलर आप फ्रिज में निकलने से लग जाता है? डायमंड निकाल के लाओ, उसमें भी पानी आएगा. नहीं, वो पानी नहीं, जो कलर निकलता है फॉन्डेंट का कलर कलर. निकलता है, ब्लीड करता है, because you are adding too much color in it. So suppose it's a primary color like red, black, जो कलर्स हमें, हाँ, तो ये सारे कलर्स आपको ऐड करके नहीं बनाने चाहिए. ये सारे कलर्स आपको खरीदने चाहिए. This also I have mentioned, right girls? ओके, ये डिफरेंस So होता है खरीदने these और dark बनाने colors, में. navy blue, chocolate brown, these colors you need to buy. Don't add in colors, and I also mentioned otherwise it's going to bleed. ओके मैम. एंड जो मैंने रोज बनाया था, तो उसमें जो लास्ट में पेटल्स लगाए थे ना, तो वो है ना स्टिक नहीं हो रहे थे. जैसे रोज को मैंने उस पर डमी पे स्टैंड किया, तो पेटल्स में लगा रही थी तो वो स्टिक नहीं उसको हो रहे थे. अपसाइड डाउन रखोगे. हाँ, फिर रोज को मैं वही किया, अपसाइड डाउन रखा. हाँ वैसे ही रखना है. बिकॉज ऑफ एक्सेस वाटर. सॉरी, कि मैंने पानी ज्यादा लगा दिया पेटल पे, इसलिए वो स्लाइड हो रहे थे. जब ज्यादा पानी है तो वो गिरेगी, या अगर पेटल्स ड्राई नहीं है तो वो गिरेंगे. पानी बहुत कम कम लगाना है. जस्ट डैम्प ब्रश, यूज योर डैम्प ब्रश, डोंट यूज वाटर, टू मच वाटर. एक्चुअली मेरे को भी पानी का इश्यू लगा था कि पानी मैंने ज्यादा लगा दिया, तभी वो इसलिए स्लाइड होगी. बाकी बहुत बहुत कम अच्छा लगाना बना है. था. मतलब ब्रश डिप करके नहीं यूज करना, पूरा उसका पानी निकाल लो. यू जस्ट नीड द डैम्प ब्रश. ओके. एंड सेकंड इज कि जो बैटर हमने बनाया था स्पॉन्ज के लिए, उसको बीटर से बीट करना है. ओके, कितनी देर के लिए करना है कि उसका कलर चेंज होगा या उसमें थिकनेस नहीं, आएगी? बैटर का कलर चेंज नहीं होगा. बैटर का बस लंप जो है वो ब्रेक हो जाए. बस 2-3-4 बार घुमाओगे तो हो जाएगा. ये वो मिक्स वेल हो जाए, अच्छे से मिक्स हो जाए. बस मिक्स वेल मतलब क्या? आई हैव आल्सो टोल्ड यू the particles of curd that you see should be there. Don't try to beat and blend the particle of curd in it. If there are lumps, break that, but not the curd particles.
because the Okay. curd particles तो will give अगर you the crumb. ये मैंने ज्यादा क्लास में ब्लेंड भी करने से भी देखा, क्लास वीडियो देखी। ओके ओके आई विल ठीक सी है, इट। ओके एंड ज्यादा ज्यादा मिक्स करने से भी डेंसिटी आ जाती ज्यादा है। मिक्स करने से आपका केक सॉगी डेंस ये सब बनेगा, because the gluten in the हाँ तो maida मतलब will get activated and it will become a very dense cake. हम्म, Don't तो overbeat यही it. हुआ होगा मैंने। Over mixing नहीं करनी है, बिल्कुल नहीं. In fact, I would suggest that you use a hand whisk, wire whisk, balloon whisk जिसको कहते हैं. हाँ वो सही रहेगा, उससे ओवर मिक्स भी नहीं ओवर होगा। मिक्सिंग नहीं करोगे, फिर भी अगर चलाते रहोगे तो उससे भी हो जाएगा. So check the video well. ओके ठीक है? ओके मैम। Okay, thank you, Manali. Now we have Shilpa and Riddhi. हेलो मैम। Hello, Shilpa. मैम मुझे ना एक क्वेश्चन आया जब आपने फोटो की बात की। आपने बोला ना कि अगर आप फोटो लेके सब चिपका दे रहे हो, प्रिंट आउट लेके सब चिपका दे रहे हो तो क्रिएटिविटी नहीं है। दैट्स ट्रू, बट कोई कस्टमर ऐसे क्लाइंट का होते हैं ना। बजट नहीं है, एग्जैक्टली बिजनेस सेशन का बजट। वेट करो, हाँ क्लाइंट का बट बजट कैसे बढ़ाना है पता चलेगा तुम्हें. ओके, नहीं वो भी क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। कोई कोई होता है ना मैम कि नहीं मुझे फोटो केक ही चाहिए, दैट्स नॉट माय इशू, मैं दे दूंगी। बट मैंने नोटिस किया है मैम कि वो फोटो लगाने के बाद वो उसमें ड्रॉपलेट्स आ जाते हैं, लाइक ऐसा लगता है कि वो ब्लर हो गया है फोटो। ऐसा नहीं होगा, इफ इट्स अ गुड क्वालिटी प्रिंट आउट इट डजंट बिकम ब्लर. तो मैंने उसको अवॉइड करने के लिए मैंने काफी जगह देखा कि वो लोग बोलते हैं कि ऊपर जेल, न्यूट्रल जेल अप्लाई करो। तो ऐसा मतलब मैं ट्राई तो नहीं की अभी तक अप्लाई करना, बिकॉज मैंने एक बार फोटो केक बनाया था, उसको फोटो बनाया एंड देन मैंने उसको फ्रिज में रखा ना So मैम, तो वो no. So what happens is, Shilpa, if you are हाँ using suppose you have a cake and you want to place like a logo or something that you're यस doing, यस and यस they हाँ want you to use a sugar sheet because then the logo comes out like exactly the same logo. हाँ 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 So you chill your cake, do everything. बस उनको देने के पहले वो शुगर शीट लगा के आप दे दो पाइपिंग करके. ओके, मतलब आप बोल रहे हैं कि उसको मैं फ्रिज में डालू ही नहीं, मत राइट? रखो. बस वही मुझसे गड़बड़ हुई थी, तो वो पूरा प्रिंट मतलब मेरा खराब हो गया था, कैसा लग रहा था कि वो एकदम फट गया हो फोटो। बस मुझे वो डाउट आया, मैंने बोला आज मैं मैम से क्लियर अगर कर ऐसा कभी दूंगी ये करना भी चीज। होता है, if you're using it, placing it हाँ on whipped cream cake. See, two हाँ things. When you place it on a whipped cream cake, it will start absorbing moisture from the whipped cream. एग्जैक्टली So एग्जैक्टली in that case, you roll out fondant thin, place हाँ your sugar sheet on the fondant, cut out the same exact size and place it on the cake. ओके That ओके way, the thin fondant will act as a shield against the whipped cream. ओके, बिकॉज फोटो पे तो जरा सा व्हिप क्रीम भी लगा तो भी फोटो फटने लगता है। क्योंकि तो उसमें पानी है, whipped cream में एग्जैक्टली पानी तो है. एग्जैक्टली वही मुझे डाउट था, तो मैं सोची आज मैं आपसे No पूछ ही problem, no लेती problem, हूँ। Shilpa. बस मुझे वही पूछना था आपसे। Okay, थैंक यू great. मैम। Thank you, Shilpa. Next is Riddhi. क्या एक एक ऐड होते जा रहे हैं, फिर अब अवनीत भी आ गई लाइन में. Every time हेलो I'm seeing two students, I talk to someone. There is one more. चलो अब रिद्धि. यस मैम। हेलो मैम। हम्म. मैम मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ बिल्कुल बोलिए. यार तो जैसे आपने आज ये मतलब फॉन्डेंट का केक बनाया एंड आपने फॉन्डेंट केक पे चिपकाया, लाइक शॉर्टनिंग से आपने लगाया है इसको, तो लाइक फॉन्डेंट के वेट से ये मतलब जैसे आपने अभी तो नीचे ये गनाश वाला केक लगा हुआ है सपोर्ट के लिए कि ये गिरेगा नहीं फॉन्डेंट, बट अगर सपोज ये पूरा लाइक सिर्फ सर्कल वाला केक होता है, ये नीचे स्क्वायर वाला कुछ केक नहीं नहीं होगा, होता, तो वो गिरेगा नहीं? वो यहाँ से चिपका हुआ है. देखो देखो मैं खींच हम्म। रही हूँ इतनी जोर. इस पे वेट सिर्फ नहीं है, इट्स स्टक ऑन टू द बॉडी ऑफ द केक. और whipped क्रीम वाले में तो अगर वो खाली नीचे अगर बेस कुछ नहीं नहीं होगा होगा. तो You will have this base, right? Where will it go? So yeah. you should stick it, like push it a little in so that it holds there. So set your cake well in the refrigerator before placing. Directly frosting करके मत लगाना, then it will slide. Set it well in the refrigerator. कितनी देर के लिए सेट करना है? 4 to 6 hours. I told you, advisable is overnight if possible. Okay, thank you मैम। Okay, Riddhi? Thank you. All the best. Avneet. Last question. हाँ जी, गुड आफ्टरनून मैम। Good afternoon, Avneet. मैम वो मैम ने कहा था कि हैंड रेज करने के लिए, इसलिए मैंने किया था, मुझे कोई डाउट नहीं है। आई? किस मैम ने कहा था? मैम का मैसेज आया था। To raise your hand. Maybe you have sent some cakes to show something. Maybe that's why.
Yes, ma'am. Did you share? Yeah, you shared this, na? They wanted me to take your name and show this to everyone. Ma'am, try this. Let me see. I didn't see it. Let me see. क्योंकि अब नहीं हम ये मैंने नहीं देखा. Can we share this again, please? Okay. Wow. Nice. Good going, अवनीत. आप ट्राई कर रहे हो, अच्छी बात है. सारी चीजें ट्राई करिए. देखो वॉल पे भी जो उन्होंने स्टार्स बनाए, आपके सारे बनाए केक्स. अच्छा, this is the review that we were talking about. Yes, ma'am. Very nice. Congratulations. चलो Thank दो you. हिस्से, दो जगह से हिस्से मिलेंगे. One is अवनीत, another one is I forgot her name, but don't worry, Thank you. we will find you. ठीक है? I Yes, hope ma'am. you do a lot of tarakki. So keep learning, keep nurturing your business. This is like your baby. Yes, ma'am. Okay, the more you Thank you. nurture, the more you learn new things and give it to your customers, they will be very happy to come back to you every time. So Yes, your ma'am. customers will never come to me and my customers won't go to you. Everybody can have their own customers. Give them good products, give them good quality stuff and give them variations of new things. Because otherwise, वो आपके पास आकर वही same pineapple cake, वही same cake, they will get bored and they will start looking Yes, for new ma'am. bakers. So it's your job to do new ideas, bring in trending ideas to give it to your customers. Then they Yes, will ma'am. not go anywhere. Thank you, ma'am. Thank you, Radhika. मैम चाय मसाला का कौन सा? चाय मसाला का फ्लेवर सबसे बढ़िया है घर पे बनाओ. ऑनेस्टली बता रही हूँ. बिकॉज उससे ज्यादा टेस्ट ऑनलाइन वाला नहीं देता. टू बी वेरी ऑनेस्ट. सो यूट्यूब पे देखिए, देयर आर गुड रेसिपीज अवेलेबल. Okay, so we are done for the day and now we can leave, and tomorrow I'll see you at 10 a.m. and we are going to talk about business of baking, and also if there are any other Q&As, we'll take that. Okay, all the best everyone and I'll see you tomorrow. Thank you. Viewer wanna pick who?